के दो वरिष्ठ नेता जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वाई पैटर्न और पूर्व मुख्यमंत्री एस जमीर, उनका कहना था, साफ कहना था कि सेंट्रल लीडर जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल लीडर जो है, उन लोगों ने बिल्कुल साफ मना कर दिया है कि नागा फ्लैग या कॉन्स्टिट्यूशन कोई समझौता में इनका समझौता का पार्ट नहीं बनने वाला है, क्योंकि उनका साफ कहना था कि बोथ वाई पैटर्न डिप्टी चीफ मिनिस्टर एस जमीर ने साफ कह दिया था सेंट्रल लीडर्स को कोट करते हुए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नागा फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड जो है उनको नहीं मानने वाला है। लेकिन कल जो है एक कोर कमेटी का सीनियर मेंबर और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार के को चेयरमैन अजो नेनू ने हमारा चैनल को यही बताया है कि कल पिक्चर जरा सा चेंज हो गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया फॉर्मूला लेकर के आगे आया है। उस फॉर्मूला है जो नागा एनएससीएन का जो फ्लैग का डिमांड था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नेना का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज विलिंग टू अलाउ द फ्लैग टू बी यूज्ड फॉर कल्चरल पर्पसेस। एंड इनका ये भी कहना था कि नागा का जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन जिसको याजाबो कहा जाता है, उनको भी एक किसी तरह से एक रिफ्लेक्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इसका रिफ्लेक्शन होंगे। तो ये आश्वासन के बाद ये जो इंप्रेशन नेनू जो को कन्वीनर है, को चेयरमैन है यूडीए का, उनका जो असेसमेंट है, उनसे लगता है कि अभी जो है नागा पीस टॉक समझौता के लिए आगे बढ़ रहा है। इन दिस बैकड्रॉप, इस बीच अभी जो कोर कमेटी का मीटिंग अभी शुरू हुआ है कोहिमा में, मुख्यमंत्री नफीरियो का घर में जो मीटिंग अभी चालू हुआ है, हम लोग पिक्चर में दिखा रहे हैं कि नेतागण दे हैव जस्ट गॉन इनसाइड द मीटिंग, बैंक्वेट हॉल में ये मीटिंग हो रहा है चीफ मिनिस्टर के घर में। इस जी फॉर्मूला है, उन्हीं को इसमें बातचीत चल रहा है। जी, जिस फार्मूले की बात आप कर रहे हैं वासवीर, काफी दिनों से गतिरोध रहा था सेपरेट फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, और अगर ये फार्मूला निकलकर सामने आया है तो जो सभी पक्ष हैं उनको कितना ये ग्रहण योग्य है? क्या इसी पर चर्चा हो रही है, और कौन कौन जो पक्ष हैं जिनको ये बातें अभी समझाना बाकी है? एक गुट को ही ये बात अभी समझाना बाकी है, क्योंकि एनएनपीजी जो है उनका ये साफ कहना है कि बातचीत उनका लिए, एनएनपीजी का कहना है उनका लिए बातचीत खत्म हो गया है, वो एग्रीमेंट में दस्तखत करने का रेडी है, दे आर रेडी टू साइन इन दैट एग्रीमेंट। लेकिन एनएससीएन आईएम का ये कोर डिमांड एनएससीएन आईएम का था, देयरफॉर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये फॉर्मूला अभी सामने लाया है, ये सिर्फ एनएससीएन आईएम को ही उनको कमेंट करना है, टिप्पणी करना है, whether they are going to accept or not। तो मैं यही कहूंगा शॉर्ट में रविंदर कि ये बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द एनएससीएन आईएम। तो आज का जो कोर कमेटी मीटिंग है, ये भी तय किया जाएगा कि ये सूत्रों ने ये भी नोटिस लाइव को कहा है कि 29 मई को मुख्यमंत्री नेफ्यूरियो और सम इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द कोर कमिटी, जिसमें टिया गिलियन भी शामिल रहेंगे, दे आर सपोज टू मीट एनएससीएन आईएम के साथ एक नागालैंड गवर्नमेंट लीडर्स का एक मीटिंग होंगे 29 तारीख को। उसके बाद जो है नागालैंड एनएससीएन ने किया है इमरजेंसी नेशनल असेंबली मीटिंग कॉल किया है, जो कि 31 मई को तय हुआ है। ये कैंप हेब्रोन में होगा ये मीटिंग, जिसमें एनएससीएन आईएम का जो वरिष्ठ नेतागण है, जिसमें इनका सिविल विंग का नेता लाइक थिंगोलैंग बुइवा रहेंगे, बीएस आटेम रहेंगे, आरएस रेजिंग रहेंगे, और उनका जो है टाटर हो जो एनएससीएन आईएम का पार्लियामेंट है, टाटर हो का इंपॉर्टेंट लीडर्स रहेंगे, इंक्लूडिंग द स्पीकर ऑफ द टाटर हो। और उसमें ना मिलिट्री विंग, एनएससीएन आईएम का जो मिलिट्री विंग है, जिनका वो मिलिट्री कमांडर्स कोट अनकोट जो है, उन मिलिट्री नेतागण भी शामिल रहेंगे। तो ये इमरजेंसी नेशनल असेंबली, इनका भी ये सूत्र का ये भी कहना है कि ये जो प्रस्ताव, जो कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफर नागालैंड एनएससीएन आईएम या नागा लोगों को लिए जो ऑफर लाया है आगे, वो भी एक फाइनल स्टैंप ऑफ अप्रूवल हो सकता है ये इमरजेंसी नेशनल असेंबली मीटिंग में। तो लगभग ये अभी इफ यू आस्क मी ब्रॉडली, आई थिंक द थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। और अभी ये लग रहा है एट द सेंस, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं द सेंस दैट आई एम गेटिंग इज दैट नागा पीस टॉक्स इज मूविंग टुवर्ड्स एन अर्ली सोल्यूशन।
जी बिल्कुल इसी तरह के आसार लग रहे हैं जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही है। वाजपेयी आपने कहा कि कैंप हेब्रोन में जो असेंबली मीटिंग होनी है 31 मई को, ये काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये आमतौर पर इस तरह की मीटिंग असेंबली की नहीं होती है, कैंप हेब्रोन की बातें। और उसके बाद आपने कहा कि 29 मई को एक बैठक होगी कोर कमेटी की, जो असेंबली में बातें बतानी है कि अब तक जो प्रोग्रेस हुए हैं वो क्या हुए हैं। इसका मतलब ये है कि सभी स्टेक होल्डर्स इसमें सक्रिय हो गए हैं और कहीं ना कहीं हम एक रूप देखने जा रहे हैं। जो नागा पीस टॉक इतने दिनों से चल रही थी, उसका एक जो रूप हमको सामने नजर आता है, जो अंतिम रूप जो है वो सामने आ रहा है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं, एनएनपीजी की बात चल रही थी और एनएससीएनआईएम की बात चल रही थी, सभी पक्षों को एकजुट करने की बात चल रही थी और मनाने की कोशिश चल रही थी। एनएनपीजी क्या लेटेस्ट क्या अपडेट बता सकते हैं? एनएनपीजी का कोई अपडेट नहीं है। एनएनपीजी का कहना है कि बातचीत खत्म हो चुका है, 2029 में ही बातचीत खत्म हो चुका है। उनका सारा प्रस्ताव जो है, उनका एग्रीड पोजीशन जो है, उसमें उनका एनएनपीजी का कहना है कि वे दस्तखत करने के लिए भी रेडी है, दे आर रेडी टू साइन। अभी बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ एनएससीएनआईएम। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट सारा कोन्याक अभी भी मौजूद है क्या, हमारा लाइन में है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड हम सारा से कोशिश करते हैं जाने के लिए। सारा हमारे साथ एडिटर इन चीफ वासबीर हुसैन हैं और काफी इंपॉर्टेंट जो इश्यू है इस पर प्रगति हो रही है। हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि वहां की हलचल क्या है। बैठक जो मीटिंग चल रही थी कोर कमेटी की, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो वो आप बता सकती हैं। Sarah, can you hear me? First of Yes, all, the meeting of the Sarah, core if committee you can have hear already me. started. We have seen Mr. Nibakronu, the UDA co-chairman, and all the other elected members arriving at the chief minister's residential office. Well, the chief minister, as I've stated earlier, will be briefing the house on what transpired in the meeting and what has been conveyed by the government of India representative to the core committee members in Delhi last week. So this will be deliberated at length by the core committee in today's meeting, and they will also be discussing at length on the meeting which will be held between the core committee and the NSA and IM ahead of the 31st meeting which has been called by the NSA and IM at Camp Hebron. जी वासबीर, आप सारा से सवाल कर सकते हैं। Okay, Sarah, if you can hear me, can you hear me, Sarah? Can you hear me? Yes, Wasbir, I can hear you now. Okay, Sarah, we are getting reports that the core committee meeting is actually discussing the formula that has been presented by the central government. The formula that the flag can be used for cultural purposes, and the constitution or the Yuzabo is also going to get a reflection in the Indian constitution. This is the breakthrough formula. Do you think the core committee is going to give a stamp of approval to this formula today? Well, yes, Wasbir, with regard to the compromise formula of where the flag will be allowed to be used in all the cultural programs, and as well as a reflection of the Yazabo, the Naga constitution, will be incorporated in the Indian constitution. Well, the state government, or if I may say the elected members, the core committee, have yet not commented anything on their side of the story whether they will also accept to this formula or not. But like I have stated earlier, Wasbir, on the surface, the things seems to be moving on the right track with regard to the Indo-Naga political issue thus far. However, we are not privy to the details which has been transpiring in all the meetings being held between the negotiating parties. Well, like I have said, however, the demand of the NSA and IM is very firm that the Naga flag and the constitution has to be a part of the final agreement, and that they will not accept anything less than that. Now, the offer being made by the government of India to the NSA and IM is contrast to the demand of the NSA and IM, as they have time again stated that flag is an integral part of the Nagas and they will not accept anything less than that in the final solution. Right. So the May Sarah, 31st meeting is going to be very significant, as what we're yes, hearing yes. is that Sarah, the leaders, the Sarah, NSA and hold on, IM hold your leaders, the thought. House will be Sarah, deliberating at length on what yeah, has been offered by the government of India and some key okay. decisions
decisions are Tata, if you can expected to hear take me. place on the 31st of May, which will eventually decide the fate of the Nagas at the end of the day. So we will All only right. have to wait and watch whether the NSA and IM will come down a little bit to the demand and accept and bring an end to these in long decades Okay, old Sarah, Indo-Naga political can you issue. hear me, Sarah? जी वासवीर आप पूछ सकते हैं सवाल, सारा के पास आपकी आवाज पहुंच रही है। Okay, Sarah, one more thing. You know, we are getting to understand that the Chief Minister Nafirio, Mr. T.R. Jeliang, Mr. Ajay Nenu, and a few other leaders are going to meet the NSC and IM top brass on 29th of May. This will be the final briefing that will be given to the NSC and IM before the NSC and IM meets their emergency National Assembly. So, what is the latest you are hearing? We are hearing sources are confirming to us that Chief Minister Nafirio and some members of the core committee are meeting the NSC and IM leaders on 29th of May. Okay, Sarah is not hearing I'm sorry, me. Wasbir, Over to you. audio is Over not to you. clear. I cannot hear your Over to you, question. Ravinder, in the studio. जी 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 वासवीर, आपकी आवाज हम सारा तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है। सारा, वासवीर ने आपसे सवाल किया था कि जो कोर कमेटी की बैठक हो रही है नेफ्यू रियो के नेतृत्व में, उनके आवास पर 29 मई के बारे में वो पूछ रहे थे, 29 मई के, और जो बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जो बातचीत हो रही है, तो 29 मई के बाद 29 मई को उसके बाद क्या होना है? Yes, like I have mentioned, Wasbir, the core committee in today's meeting will be deliberating at length regarding the meeting which they will be holding with the NSA and IM top leaders, where the General Secretary Mr. T.H. Muiva will also be present in the meeting. This is a very crucial time for the Nagas, as like I've said, things seems to be moving on the right track on the surface. However, we cannot come to any conclusion right now. If we recall back the recent visit of the Government of India representative who was here to hold talks, especially with the NSA and IM at Dimapur. There, the NSA and IM have conveyed it very clearly to the Government of India representative that without the flag and the constitution, there can be no inking to the final solution. And what we have heard from our sources was that the Government of India representative had also held series of meetings with the NGOs, with the civil societies and the tribal leaders here in the state while he was camping here for a week. So to what we can make it out is that the Government of India is also working out every possibility to ensure that the NSA and IM is in a way or the other convinced to accept what the Government of India have offered to them, that is for the flag to be used in the cultural programs and the constitution to be reflected in the Indian constitution, the Yezabo. So this is going to be a very crucial time. We will only have to wait and watch whether the core committee members in their meeting with the NSA and IM will be able to convince the leaders to agree to what has been offered by the Government of India. Right. जी वासवीर, आप पूछ सकते हैं। Yeah, Ravinder, ये मैं यही कहना चाहता हूँ। सारा स्टैंड बाय, सारा प्लीज स्टैंड बाय। रविंद्र, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मीटिंग आज हो रहा है मुख्यमंत्री के रेसिडेंस में, इसमें सभी राज्य सरकार की या ऑपोजिशन की सभी वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद है। जो नागालैंड के जो पॉलिटिकल ओपिनियन है, डाइवर्स पॉलिटिकल ओपिनियन जो है, ये सारे नेतागण इस कोर कमेटी मीटिंग में बैठा हुआ है। कल आजो नेन्यू जो कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार के को चेयरमैन है, उनको एक साफ कहना था कि जो नागालैंड के चुने हुए जो एमएलए है, चुने हुए लेजिस्लेटर्स है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनका भी एक बड़ा रोल रहेगा। ये अभी ये रोड मैप ये तैयार हुआ है रविंदर कि आज कोर कमेटी का मीटिंग हो रहा है। 29 तारीख को मुख्यमंत्री एनएससी एंड आईएम से मिलेंगे, ये कोर कमेटी का डिसीजन उनको बताएंगे। उसके बाद जो है
NSCNIM ने खुद अपना इमरजेंसी नेशनल असेंबली सेशन कॉल किया है। तो देयर इज अ सीरीज ऑफ मीटिंग। उसके बाद अगर ये जो ड्राफ्ट प्रपोजल है, ये जो कंप्रोमाइज फॉर्मूला, ये जो ऑफर है भारत सरकार की, ये अगर NSCNIM ये अगर मान लेता है तो ये एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट में बदल दिया जाएगा। ड्राफ्ट एग्रीमेंट में दो साइड जो है NSCNIM का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, NSCNIM का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट और NNPGO का एग्रीड पोजीशन, इसमें दो ग्रुप गुट का जो एग्रीड पोजीशंस है, NSCNIM का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट और NNPG का एग्रीड पोजीशन, उन दोनों को मिला दिया जाएगा। मिला करके एक कॉमन ड्राफ्ट एग्रीमेंट बनाएगा जिसको MLA जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को पेश किया जाएगा। उनका उन खुद डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये पब्लिक डोमेन में इसको दिया जाएगा फॉर द पीपल टू सी एंड कमेंट। तो ये भी कहना है रविंदर कि नागा पीस अकॉर्ड का जो ड्राफ्ट होंगे वो पब्लिक डोमेन में दिया जाएगा ताकि ये जो कॉमन आम आदमी है उनको देख करके उनका भी कमेंट उसमें लिया जाएगा। उसके बाद ही दस्तखत होगा। So that is the timeline for the entire Naga peace process at this point in time, Ravinder. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई है वासवीर। एक तो आपने कहा कि NSCNIM के साथ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो हुआ था उसको और NNPG के साथ एग्रीड जो पोजीशन था उसको मिलाकर जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट बनना है और वो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कॉमन ड्राफ्ट एग्रीमेंट की बात आप कर रहे हैं। साथ ही जो कॉमन पीपल हैं नागालैंड के, उनको साथ लिया जाएगा। इससे पहले आपने कहा कि जो प्रतिनिधि हैं, अलग अलग जो पार्टी के प्रतिनिधि हैं, उनको भी एक साथ लेकर बातचीत चल रही है। तो समग्र रूप से काफी इंक्लूसिव जो टॉक है वो देखा जा रहा है। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं वासवीर, इसका क्रोनोलॉजी, जो दिल्ली में NSCNIM के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने वहां के लीडर से मुलाकात की, फिर इसके बाद कोर कमेटी के मेंबर्स दिल्ली में जाके बैठे। इसका मतलब साफ है कि दिल्ली की तरफ से जो मैसेज कन्वे करना था वो कर दिया गया है। उसको किस तरह से आगे लागू किया जाए, जो रोड मैप आप कह रहे हैं, उस पर अभी काम चल रहा है। जी बिल्कुल रविंदर, आपने बहुत ही सही तरीका से ये इसको समाप्त किया है। तो ये दिस एंटायर रोड मैप अभी साफ नजर आ रहा है। रोड मैप जो है नागा पीस एग्रीमेंट का तरफ जो रोड मैप है ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। आज कोर कमेटी, अभी कई दिन पहले दिल्ली में मीटिंग हुआ, देखिए नागालैंड सरकार की 4 या 5 वरिष्ठ अधिकारी इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ द यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, डेप्यूटी चेयरमैन, को चेयरमैन ऑफ द यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, सारे नेतागण दिल्ली में गए थे। They had met the NSCNIM leaders जो कि वहां पहले से ही मौजूद थे। NNPG का नेतागण भी वहां पे मौजूद थे। Then they had made a meeting और सेंटर का पीस इंटरलोक्यूटर AK मिश्रा जो है उनसे भी अलग अलग बातचीत हुआ। आफ्टर दैट दे हैव कम बैक एंड आज ये कोर कमेटी का मीटिंग अभी चल रहा है। उसके बाद 29 तारीख को मुख्यमंत्री रेफ्यूडियो NSCN से मिलना है। उसके बाद NSCN ने खुद द इमरजेंसी नेशनल असेंबली तय किया है। आफ्टर दैट देयर विल बी अ कॉमन ड्राफ्ट एग्रीमेंट and that will be discussed by the elected representatives and then placed before the people, and that is public domain. That is what sources are telling us. That is what the roadmap if sources telling us are to be believed. बिल्कुल, इस महत्वपूर्ण डेवलपमेंट पर हम चाहेंगे कि हमारी नजरें बनी रहें। आप भी इस पर नजर बनाए रखिए और सारा कोनिया को भी, हमारी संवाददाताओं को कहेंगे कि इस पर नजर बनाए रखिए, क्या कुछ निकल कर आता है आज की इस बैठक के बाद। उसके बाद हम दर्शकों को इस बात की भी जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. Oh, wow. অপূর্ব ভ্যারাইটি, অপূর্ব মূল্য। ডাউনলোড মিশো। कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर पाया। All the best. We, the people of the Northeast, can also contest it. पूर्वोत्तर में क्या रही आज की सुर्खियां? चुनावी राज्यों की राजनीतिक हलचल।
देश विदेश की वो खबरें जिससे है अपनों का खास नाता। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार। जानने के लिए देखिए समाचार नॉर्थ ईस्ट हर शाम 6 बजे। চাওচোন কোন নতুন খেলুৱৈ আহিছে। বজাই দিম আজি। মৰমেৰে বুজাম লাহে লাহে কৰি। তেওঁ আমাৰ মাত কথাই কয়। এয়াতো আমাৰেই মাত কথা। মাত কথা যদি এক তেন্তে হৃদয়ো এক হোৱা উচিত। বিমল কক ভাষা কেচৰি। Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. Evening Prime, the primetime news at 7. Now, in a whole new look. Only on Northeast Live. Your station, your voice. कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर पाया। All the best. We, the people of the Northeast, can also contest it. पूर्वोत्तर में क्या रही आज की सुर्खियां? चुनावी राज्यों की राजनीतिक हलचल। देश विदेश की वो खबरें जिससे है अपनों का खास नाता। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार। जानने के लिए देखिए समाचार नॉर्थ ईस्ट हर शाम 6 बजे। Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. Evening Prime, the primetime news at 7. Now, in a whole new look. Only on Northeast Live. Your station, your voice. कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर पाया। All the best. We, the people of the Northeast, can also contest it. पूर्वोत्तर में क्या रही आज की सुर्खियां? चुनावी राज्यों की राजनीतिक हलचल। देश विदेश की वो खबरें जिससे है अपनों का खास नाता। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार। जानने के लिए देखिए समाचार नॉर्थ ईस्ट हर शाम 6 बजे। Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. Evening Prime, the primetime news at 7. Now, in a whole new look. Only on Northeast Live. Your station, your voice.
कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर पाया। All the best. We, the people of the Northeast, can also contest it. पूर्वोत्तर में क्या रही आज की सुर्खियां? चुनावी राज्यों की राजनीतिक हलचल। देश विदेश की वो खबरें जिससे है अपनों का खास नाता। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार। जानने के लिए देखिए समाचार नॉर्थ ईस्ट हर शाम 6 बजे। ओ वाह, ओ वाह, অভূতপূর্ব ভ্যারাইটি, অপূর্ব মূল্য। ডাউনলোড মিশো। Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage. Evening Prime, the primetime news at 7. Now, in a whole new look. Only on Northeast Live. Your station, your voice. कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर पाया। All the best. We, the people of the Northeast, can also contest it. पूर्वोत्तर में क्या रही आज की सुर्खियां? चुनावी राज्यों की राजनीतिक हलचल। Good afternoon. You're watching Northeast Live. I'm Priyadarshini Medhi, and we start the bulletin with a big story at this hour. The core committee of the Parliamentary Committee on Naga political issue is holding a crucial meet in Kohima. Well, this is the first meeting of the core committee after the leaders, including Chief Minister Nephew Rio, returned from the national capital following crucial round of discussions with the NSC-NIM and interlocutor A.K. Mishra. The meeting, sources said, will discuss the Government of India's formula to resolve the flag and constitution issues. Well, the meeting is also crucial as the core committee members, led by Chief Minister Nephew Rio, will meet NSC-NIM leaders on May 29th. So, big story we are tracking at this point in time, viewers. Well, the core committee of the Parliament is holding a very crucial meet at this point in time. And now I'm being joined with our editor-in-chief, Wasbir Hussain, live from the newsroom. So, Wasbir, crucial meet of the core committee on Naga issue. So, is the road map for Naga's solution becoming clear, Wasbir? Absolutely, Priya. It seems that the roadmap for a solution to the protracted Naga issue is becoming clearer by the day. Now, at this point in time, as we speak, the core committee of the parliamentary committee, the core committee on the Naga peace talks, are having its very, very crucial meeting at the residence of Nagaland Chief Minister Nephew Rio. The meeting is taking place in the banquet hall in the Chief Minister's residence, attended by almost all the members of the core committee. There is Chief Minister Nephew Rio, there is Deputy Chief Minister Y. Patton, there is T.R. Jeliang, there is Ajo Neno, and there are also the member of parliaments and all the other members of the core committee. The member secretary, that is Neba Krono, is also present in that meeting. So all the top leaders are meeting, and sources are telling Northeast Live that the meeting is discussing the offer that has been the latest offer that the center has
forwarded to the Naga people. As we all know, the deadlock was over the NSCNIM's core demand of flag and separate flag and constitution. Now, there was a time in the last fortnight when almost people thought that the central government has absolutely rejected in no uncertain terms these two demands, because that was what two important Naga leaders, that is Y. Patton, the Deputy Chief Minister, and former Chief Minister S.C. Zamir had said that the government of India, or for that matter the central leaders, was just about not willing to consider that the demand of a flag and constitution. But yesterday, Mr. Ajo Nenu had told our channel, he is the co-chairman of the ruling United Democratic Alliance, he is a member of the core committee. He had told our channel that the center has come forward with an offer that the flag can be used by the Naga people for cultural purposes, and that the Naga statute or the Yazabo is also going to find reflection in the Indian constitution. This is the offer that the core committee at this point is believed to be discussing. So therefore the core committee engaged at this point in time in a very, very crucial meeting, after which, of course, as we have been reporting for the last 1 hour or so, the chief minister will meet the NSCN-IM on 29th of May. That is what sources are telling us. He will be accompanied by Mr. T.R. Jeliang, Mr. Ajo Neno, and few other leaders of the core committee. And of course, we all know by now that we have broken the story that the NSCN-IM has called an emergency National Assembly meeting, where all its civil wing leaders, the military wing leaders, and the members of the Tata or Ho-Ho or the NSCN-IM parliament are also going to attend. Right, Wasbir. So what is also significant is that the core committee members will meet the NSCN-IM on May 29th. And as K. Nenu told us last night, the core committee is expected to be very straightforward to the IM leaders. And isn't it, Wasbir? Absolutely, that is what Mr. Nenu had told during the show with me last night, that the core committee is going to tell the NSCN-IM leaders in no uncertain terms that just like the government of India has walked the extra mile to reach a solution, he said that NSCN-IM also need to come forward to accept a solution that is of course honorable and acceptable. That is understood. But the appeal by the various political leaders, including the government leaders, as well as the civil society in Nagaland, is for the NSCN-IM to take a call. And because the ball obviously at this point in time lies in the court of the NSCN-IM. I just want to know whether our Nagaland correspondent Sarah Kanyak is we have us. Sarah with us. Sarah, if you can hear me, Sarah, what's going on? This is a very, very critical meeting, and we are given to understand that this meeting is discussing the offer that the central government has come up with, the latest draft that the central government has come up with. So I will talk about the timeline, but what are you hearing at this point in time about the meeting that is going on? Yes, Wasbir, absolutely. The core committee meeting, which is being led by the chief minister himself, have begun just a while back. Top leaders like T.R. Jeliang, deputy CM, and other leaders are also present in the meeting. Yes, what we're hearing from our sources is that the chief minister will be briefing the House on what transpired in the crucial meetings that took place in Delhi between the Government of India representative and the Naga negotiating parties. And yes, definitely, sources have informed us that the House will be deliberating and discussing at length on the offer which has been laid by the Government of India to the NSCN-IM, that is for the flag to be used in the cultural programs, and the Yazabo, the Naga constitution, to be incorporated in the Indian constitution. Well, if we recall back, Wasbir, the NSCN-IM have time and again made their stand very clear that they will not accept anything less than the flag and the constitution. And the demand of the NSCN-IM and the offer being made by the Government of India is in little contrast. So the May 31st meeting is going to be very crucial and very significant, as sources are telling us that the NSCN-IM leaders will be taking some key decisions on the 31st of May, which is to be held at Camp Hebron. Right, Sarah, stand by. Don't go away. Let me give the viewers a sense of the timeline.
let me give the viewers a sense of the timeline leading to a possible solution to the protracted Naga issue. As we know, the Naga issue is as old as India's independence, 1947, and it has its history in 1929 when the Simon Commission had visited Nagaland and seeking the opinion as to the views of the Nagaland because India was knocking at the doors of freedom at that point in time. The Nagas had written to the Simon Commission that they want to stay as a free people. So that was the representation in 1929. That was the basis. That was the representation made by the Naga Club at that point in time. So that was the basis. 1947, India became independent, and the Nagas continued with their movement. There was an insurrection led by Angami Japu Fizo, considered the father of the Naga insurgency. He went off to London via East Pakistan. That was in 1956, and the insurrection continued. In 1980, the Naga National Council, the NSCN, was formed. In 1988, the NSCN got split, and thereafter there has been several factions have emerged on the scene. In 1997, of course, the ceasefire was declared between the NSC and IM and the government of India. That took place after serious confabulations in various international capitals, whether it was Chiang Mai, whether it was even there was discussions in Rome. There were discussions all over the world and different international capitals, and then the ceasefire came into effect in 1997. After that, for the last 25 years, there has been negotiations going on between the government of India and the NSC and IM. Of course, in the last couple of years, the new group has been formed, that is the Naga National Political Group. That is an umbrella organization of 7 different Naga insurgent factions. So we have the NSC and IM on one side and the NNPGs on the other. So there have been parallel talks going on between the government of India and the NSC and IM on one side, government of India and the NNPGs on the other. On the 3rd of August 2015, the NSC and IM, with signatures of Isaac Sisi Chu, who was then alive, he was the chairman, and Twingalang Muiva and others, they signed a framework agreement in presence of Prime Minister Narendra Modi and Ravi, who was the interlocutor then. And of course, thereafter in 2019, the agreed position came into being. That was an agreement that was signed between the government of India and the NNPGs. Thereafter, the issue they hit a roadblock because the NSC and IM said that they are not going to sign on the dotted line. They're not going to sign on any Naga peace accord without the core demand of a flag and constitution being considered by the government of India. So that was the deadlock. And thereafter, in the last fortnight, in the last 3 weeks, there have been brisk movement as far as the Naga peace talks are concerned. The Nagaland government leaders, as you know, there is an opposition-less government in Nagaland at this juncture. The Nagaland government leaders, they rushed to New Delhi. The NSC and IM delegation was already there. The NNPG delegation was already there. There were several rounds of discussions between these groups. There were discussions between the Nagaland government leaders with the interlocutor A.K. Mishra. And after that, they have returned and they were absolutely silent. In the meantime, 2 prominent Naga political leaders, Deputy Chief Minister Y. Patton and former Chief Minister S.C. Zamir, both belonging to 2 different political spectrums, they said more or less the same thing. They said in statements in Nagaland that the government of India, or for that matter the central leaders, have absolutely said no to the demand for a separate Naga flag and constitution. So there was a feeling that the talks have once again hit a red roadblock. But again, yesterday things changed because Ajo Nenu, the co-chairman of the United Democratic Alliance, that's the ruling alliance in Nagaland, and he is also the member of the core committee, said that the government of India has come up with some kind of a formula that the flag will be used for cultural purposes. That means they're ready to concede to some extent on the flag, and they said that even the Naga constitution or the Naga Yazabo will find some reflection in the Indian constitution. So if this can be considered, if this is to be considered as a compromise formula, then that is what the core committee at this point is discussing. Now, after the core committee takes a decision, they are going to meet the NSC and IM leadership. That is going to take place on 29. That's what we are hearing. And after that, the NSC and IM has already called an emergency National Assembly session where its civilian and military wing leaders, apart from the Tata Ho parliamentary leaders, are going to attend. So this is the highest body of the NSC and IM that is going to meet. This is an extremely rare meeting that is going to take place at Camp Hebron. After that, if the NSCN gives the go-ahead to the central's proposal, now the framework agreement and the agreed position of the NSC and IM, both combined, there will be a draft agreement for a final agreement. There will be a final draft agreement for the Naga peace talks or Naga peace process is concerned. That will be given to the elected representatives and then, of course, to the public domain. It is only after the Nagas, the ordinary Naga people, have seen
the draft agreement is the agreement going to be actually signed by the stakeholders. That is the roadmap that Northeast Live has heard so far. We'll have to wait and watch whether all of this is true or whether this is partially true. But at this point, as we are reporting, a very, very crucial core committee meeting going on in Kohima, and our correspondent Sarah Konyak is standing by right outside the Chief Minister's residence to bring you all the details. All right, Wasbir, thank you so much for all those details. So Sarah Konyak will come back to you in a later bulletin. So, but big story at this point in time is that the core committee of the Parliamentary Committee on Naga Political Issue is holding a very crucial meet at this point in time in Kohima. And our correspondent Sarah Konyak is right there outside the residence of Chief Minister Nephew Rio. And this is the first meeting of the core committee after the leaders, including Chief Minister Nephew Rio, returned from New Delhi, following crucial round of discussions with the NSC and IM and interlocutor AK Mishra. Well, the meeting sources said will discuss the government of India's formula to resolve the flag and constitution issues. And also let me tell our viewers here that the meeting is also crucial as the core committee members led by Chief Minister Nephew Rio will meet NSC and IM leaders on May 29th. And not only this, well, also it may be mentioned here that the NSC and IM has called a rare meeting of its topmost leaders on May 31st. Well, news and updates continue on Northeast Live, so stay tuned for more news. Evening Prime, the primetime news at 7. Now, in a whole new look. Only on Northeast Live. Your station, your voice. Salmonella. Absent. Perfect attendance. নিমৰ শক্তি ভৰা নিমাইলে আঁতৰাই 100টা বেমাৰ বিয়পোৱা বীজাণু নিমাইল ঘৰ বিশুদ্ধ ঘৰ সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ Northeast Live, the most viewed news channel in the region. On YouTube, unmatched coverage.